immunity part, I'm going to tell you about introduction, then types of immunity, humoral and cellular immunity. बहुत interesting. So the word immunity nowadays very much popular to you people because after COVID-19 you have taken lots of immunity boosting that is various nutraceuticals है ना. So actually जो है immunity क्या है, कैसे काम करती है, everything we shall learn in particular today's discussion. So, in definition, if I tell, I will mention that immunity is the ability of human body to resist almost all kinds of organism, to resist against almost all kinds of organism and toxins that tends to damage the tissues, organs, organisms like fungi, protozoa, bacteria, virus, and all other the potential pathogen. माने how you can develop, how you can make your body so much capable so that your body can resist against all kinds of such organisms like fungi, protozoa, etc., and various toxins. So it's a ability of our human body. Immunity is a ability of our human body. Immunity broadly involves the resistance that is shown and protection offered by the host organism against the infection diseases. So there are lots of disease, for example like HIV. HIV में क्या होता है, immunity जो है ना वो down हो जाती है HIV में. So if somebody is fit, if his immunity is very high, so none of the viruses will be able to reduce the immunity of a person. Okay, so the immune system consists of complex network of cell and molecules. Complex network of cells and molecules. Let me show you one of the network so that your interest will increase a lot. So देखो, here you can see one network, है ना? Trust me, when I was also a student like you many years back, when I have also seen this network, मुझे बहुत difficult लगा. But after some time, I have learned the immunity from top that is professors, then it become very much easier. So whatever you are observing right now, you might be thinking, oh my god, sir, immunity तो जो immune system है काफी complex है. You might be thinking, yes. But trust me, after few minutes, only after few minutes, by yourself you will be telling me, this immunity तो बहुत आसान है. So let me bring you my first slide and make the complex thing very easier for you. So तुम देखोगे कैसे सारा जो ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है बहुत आसान हो जाएगा. हाउ द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इज एक्चुअली वर्किंग to save your body from various microbes. Here you can see one girl, she is fighting with these microbes. In reality, microbes are actually very smaller, less than that is a 1 micrometer in size, 1 micrometer. But for this only to make that is a fun or only to for visualization, we have tried to show in this manner. Microbes are basically much more smaller. Microbes ऐसे नहीं होते. Now, let me also mention that it's a specifically designed to eliminate infectious organism from our body. Okay, for example, this is a picture of SARS, CoV-2 or other kinds of microorganism. So such things will be not able to generate in your body, and this is possible since the organism is capable of distinguishing the self from non-self or eliminating non-selves. Mane, your immune cells, I will tell you more. What is immune cells? Your immune cells will be able to distinguish between all the foreign substances and all the components or all the proteins are available in your body. Okay, so here I have a very interesting picture, and I am sure you will be not getting this kinds of picture in general books. Okay, बहुत मुश्किल से जो है सर्च करके मैंने निकाला इसको. So here in your body we have 3 level of the immune defense. हमारे बॉडी में जो है 3 लेवल की इम्यून डिफेंस है. Here you can see these are various pathogen microorganism. These are the various virus, bacteria and other microorganisms. Okay, so these are the pathogens. So how your body, how your immune system actually saving yourself from these pathogens. So that's why to save your body from these pathogens you have 3 level of the human defense. First, you have the physiological barrier, like you have skin, mucous membrane, cilia, body temperature and pH. These are the physiological and physical barriers. Then you have the innate immunity. Neutrophil, basophil, eosinophil, macrophage, mast cell, dendritic cells and like natural killer cell. These are the innate immunity producing cells. And then you have the adaptive immunity,
like helper that is various helper cells and cytotoxic cells. In that we have the mostly T cells and C cells. T cells and B cells. Okay, T cells are like helper cytotoxic, B cells are like naive and other kinds of that is B cells are also available, memory B cells, etc., etc. So in nutshell, I want to make the concept very simple, very easy, and to simplify the thing. Let me inform you that the way our immune system is actually protecting us, similar way our country is also get protected from the external enemy. हमारे देश में जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आतंकवादी घुस आते हमारे देश में, है ना, फिर क्या होते हैं, या फिर बॉर्डर में जो है, बॉर्डर में जो फॉरेन कंट्री है पाकिस्तान एंड चाइना, दे आर अटैकिंग, they are our enemy. So to save our country we have external barriers, जैसे लाइक बीएसएफ हमारे देश में है, बीएसएफ है हमारे पास, आर्मी है ना, फिर भी मान लो बीएसएफ आर्मी कहाँ पे, बॉर्डर में है, तो हमारे कंट्री के लिए जैसे बीएसएफ और आर्मी बॉर्डर में है, सिमिलरली इन आवर बॉडी, in the our body as an external or as a physical barrier, we have skin and other things. For example, you may just imagine बॉर्डर में तो बीएसएफ है, आर्मी है, बट स्टिल कुछ आतंकवादी जो है वो हमारे देश के अंदर जो है दैट इज एंटर कर लेते हैं. सो इन दैट केस व्हाट वी हैव पुलिस, POLICE, पुलिस, है ना. बहुत टाइम तुम लोगों ने देखे होंगे कि बॉर्डर को क्रॉस करके जो है आतंकवादी घुस आते हैं, तो इन दैट केस पुलिस जो है इनको पकड़ते हैं, बिकॉज पुलिस के पास पूरा इन्फॉर्मेशन है, जो भी है पुलिस, IB, रॉ, दे आर डूइंग सम एक्टिविटी. सिमिलरली अगर स्किन, ये सारे जो दिख रहे हो दैट इज म्यूकस एंड सिलिया, इफ ए पैथोजन, इफ माइक्रोऑर्गेनिज्म क्रॉसिंग all these various barrier and if they may enter in your body, then these things will be take care of. जैसे टेररिस्ट के केस में पुलिस पकड़ती है, बट इफ द थिंग इज मच मोर डेंजरस, if they are able to if police cannot control them, or in our case if our innate immunity system cannot control them, then what do you do, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग NSG को बुलाते हैं, NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड. तुम लोगों को याद होगा जब 26/11 हुआ था ना मुंबई में टेररिस्ट अटैक, तो उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम जो है NSG को बुलाया गया था, याद है तुम लोगों को, 26/11 इन मुंबई. सिमिलरली अगर हमारे केस में हमारे इन आवर बॉडी, इफ फिजियोलॉजिकल बैरियर, इनेट इम्यून सिस्टम, इफ दे कैन नॉट वर्क, इन दैट केस आवर NSG इज द T सेल और B सेल, हमारी NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड. कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये चीज समझ में आया तुम लोगों को, आसान लगा? एक बार मुझे अनम्यूट करके बता दो. यस सर. ओके, सो यस सर. ओके ग्रेट. सो ये चीज़ हमेशा तुम लोग याद रखना, बिकॉज तुम देखना मेरी बात, जब भी किताब ओपन करोगे ना बहुत कन्फ्यूजन होगा, सारे जो है दैट इज आगे पीछे बहुत सारी बुक्स में जो है डिफरेंट वे में मेंशन किया हुआ है, यू विल बी कंफ्यूज्ड. सो दैट्स व्हाई यू शुड रिमेंबर in this manner, and you should remember, you may correlate that thing with our India's defense system. हमारे देश में जैसे है पुलिस, मैं इसको कहता हूँ पुलिस, POLICE, ये सारे जो इंडियन सिस्टम है पुलिस, इस दीज आर द लाइक आवर BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और आर्मी. आर्मी कहाँ पे, आर्मी है जम्मू में, जम्मू कश्मीर, वहाँ पे आर्मी है, वहाँ पे BSF भी जो है वहाँ पे लगे हुए हैं. और इन लोगों से अगर काम नहीं हुआ तो क्या करते हैं, NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड. ठीक है, ऐसे तुम लोग जो है याद रख सकते हो. एंड द वे immune system is protecting our body, similarly our defense systems are also protecting our country. There are big similarity. Okay, now let me take to you to more detail. Now let me first focus on the physical or physiological barrier. So after discussing this part, you are very much clear that what I am trying to say. So skin, it is the largest organ in our human body, consisting 15% of the adult body weight. And skin providing the mechanical barrier to prevent the entry of the microorganisms into the microorganisms and viruses. देखो अगर स्किन नहीं होते तो क्या होता, माइक्रोऑर्गेनिज्म डायरेक्टली हमारी जो है बॉडी में एंटर कर लेते. दैट्स व्हाई स्किन इज प्लेइंग ए वेरी बिग रोल. Acidic environment like 3 to 5 and that is a pH environment on the skin surface exhibit the growth of the certain microorganism. कुछ areas में जो है ना in our that is a skin surface you will be getting this kinds of pH, not in every area, in some of the areas. Okay, and the sweats containing the enzymes, lysozyme. I hope you are aware about the lysozyme. Lysozyme बहुत ही important enzyme है. It can destroy the bacterial cell wall. Lysozyme. तो जब भी तुम लोग देखे होंगे कि जो those youths are actually going to gym, उनके immunity बहुत ही strong होती है.
है ना, those boys and girls including girls, those actually going to gym, उनका immunity बहुत strong होती है. You know why? Because they are habitual to release the lysozyme. तो लाइसोजाइम जो है वो कहाँ पे होते हैं, स्वेट में होते हैं, एंड इट इज एबल टू डेस्ट्रॉय द बैक्टीरियल सेल वॉल. बैक्टीरिया कैन नॉट दैट इज अ डेस्ट्रॉय बॉडी. दैट्स व्हाई बच्चों जिम जाना, मेहनत करना, सो दैट पसीना जो है वो निकले बॉडी से. Then any infectious agent attempting to gain entry to the body must first breach these surfaces that are largely impermeable to the microorganism. That is why cut, scrapes that breach this physical barrier often followed by the infection. देखो, these are the that is skin and other these things I am mentioning here. These are the largely, and it is a very strong that is a impermeable to the microbes. Microbes जो है skin को penetrate करके अंदर नहीं आ सकते. Microbes cannot enter in your body by penetrating the skin. So that's why if any cut may happen in your body part, if any scrap may happen in your body part, in that case it will breach the physical barrier and that thing will lead to the infection. ठीक है. So that's why this is the first kind of our defense system. First, now second, innate immunity. So you have to understand that few immunity we already have. Actually, in many of the books you will be getting they are actually discussing innate immunity along with this. बहुत सारे बुक्स में जो है ना इन दोनों को एक साथ में कहते हैं innate immunity. बट नए जो बुक्स है, न्यूयर बुक्स में जो है इसको अलग अलग जो है सेपरेट कैटेगरी माना गया. एनीवे, सो लेट मी जस्ट फोकस ऑन दिस वेरियस सेल ऑफ द इनेट इम्यूनिटी. सो इनेट इम्यूनिटी और ऑल्सो कॉल्ड एज द नेचुरल और नेटिव इम्यूनिटी. यू नो व्हाई नेचुरल और नेटिव इम्यूनिटी? बिकॉज if a children that is got birth on today, so that children will having this kinds of immunity. It will be these children having neutrophil, basophil, eosinophil, macrophage, mast cell, dendritic cells, and natural killer cells. These children will have these kinds of things. So innate immunity consists of the cellular and biochemical defense mechanism that are in place even before infection and other poised to the response rapidly to the infection. इन्फेक्शन से पहले से ही ये जो सारे वेपन है ये सारे मौजूद होंगे. इन्फेक्शन से पहले से ही ये जो वेपन है पहले से मौजूद है. जैसे हमारे देश में, हमारे सिटी में पुलिस होते हैं, हमारे घर के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड को जो है हम रखते हैं, है ना. बिकॉज यू आर नॉट अवेयर किस टाइम जो है टेररिस्ट या फिर कोई कल्प्रेट सम रॉन्ग पीपल में कम. दैट्स व्हाई यू ऑलवेज मेंटेन सम सिक्योरिटी. So similarly in our case also, in immunity also, the various cells, neutrophil, basophil, eosinophil, then your macrophage and your mast cell, dendritic cell, and natural killer cell will be already present. Okay, this mechanism react to product of microbes and injured cell. They respond in essentially to the same way to the repeated exposure. And these mechanism of the innate immunity are specific for structure that are common to the group related to the especially microbes and may not distinguish between the differences between the microbes. Okay, so these are the general. पुलिस जो है ना, पुलिस सबसे तलाशी करेंगे. पुलिस जो है सभी से जो है पुलिस जो है अपना दैट इज छानबीन कर सकते हैं. बट फॉर एग्जांपल लाइक सीबीआई, ईडी, एनएसजी, they are not working like police. Similarly, CBI, NSG ये जो सारे हैं, they are working like adaptive immunity. I will tell you more. Okay, so पुलिस जैसे काम करते हैं, similarly हमारे बॉडी में innate immunity जो है हमारे बॉडी का डिफेंस प्रोवाइड करती है. So here are the various cells and what are their functions. You have seen in police you have DIG, you have DSP, then SP, then inspector general, inspector, sub inspector, है ना, हविलदार जैसे होते. in our body similar manner we have these things: neutrophil, basophil, eosinophil, macrophage, then your mast cell, dendritic cell, and killer cell. Neutrophil क्या काम करते हैं? Neutrophils are actually doing wound healing और recruit other neutrophils and macrophages. ठीक है. न्यूट्रोफिल को तुम ऐसे कोरिलेट कर सकते हो लाइक फायर ब्रिगेड. मान लो कहीं पे आग लग गया, टेररिस्ट ने जो है कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, तो फायर ब्रिगेड पहुंचती है ना. तो ऐसे जैसे फायर ब्रिगेड क्या करते हैं, आग बुझाती है. यहाँ पे न्यूट्रोफिल जो है वोंड हीलिंग, तुम्हारे बॉडी पे कहीं पे वोंड हो गया, कहीं पे जख्म हो गया, तो जख्म को जो है वो हील करेगा न्यूट्रोफिल. देन बेसोफिल, इट विल रिलीज हिस्टामिन. ईसोनोफिल, इट विल सीक्रेट द टॉक्सिक प्रोटीन, फ्री रेडिकल्स, एंड किलिंग द पैरासाइट्स. वेरी 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 इंपॉर्टेंट.
पुलिस में भी जो है तुम लोगों ने देखे होंगे स्पेशल टास्क फोर्स STF, पुलिस में ऐसा स्पेशल टास्क फोर्स तुम लोगों ने सुने होंगे, या फिर ATS जो सीधा गोली मार देती है, पुलिस जो है आतंकवादी ज्ञान काउंटर करती है। सिमिलरली इन आवर बॉडी वी हैव eosinophil. Another thing very interesting, मैक्रोफेज मेरा बहुत पसंद है। They can phagocyte bacteria and other kinds of microbes. Phagocyte, मैक्रोफेज, मैक्रोफेज जो है वो पकड़ लेगा। जैसे पुलिस जैसे अरेस्ट कर लेते हैं ना, द वे पुलिस एक्चुअली अरेस्टिंग सम क्रिमिनल्स, सिमिलरली मैक्रोफेज जो है वो फैगोसाइटोसिस पता है तुम लोगों को। जैसे यहाँ पे मान लो कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन वायरस है, तो यहाँ पे जो है तुम्हारा पर्टिकुलर जो मैक्रोफेज है, तो वो इसको जो है यहाँ पे निगल लेगा ऐसे लाइक दिस। ये जो है ये इंक्रीज करेगा पहले थोड़ा और फिर थोड़ा और, फिर इसको निगल लेगा पूरा, माने अरेस्ट। ठीक है, देखो मैं कैसे सारा चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ताकि तुम लोग इसको जो है पूरा लाइफ तुम लोग याद रखो। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग जो है आवर इम्यून सिस्टम। मैंने इसीलिए जो है सबसे लास्ट में इस टॉपिक को पढ़ाने का मैंने जो है बारे में सोचा, बिकॉज एनी ऑफ यू विल बी टेकिंग डिफरेंट बुक्स, तुम लोग डिफरेंट बुक्स से जो है पढ़ाई करोगे, तो तुम लोगों को डिफिकल्टीज ना हो, तो इसीलिए आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल ऑफ द सिनेरियो ऑफ द आवर दैट इज अ कंट्री लेवल और नेशनल लेवल और सिटी लेवल डिफेंस सिस्टम। ठीक है, मास्ट सेल, another important cell, they can recognize harmful antigen by binding to the pathogen directly। देखो बाइंडिंग माने फॉर एग्जांपल लाइक आईबी क्या करती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो लोग इधर उधर के लोगों से जगह बात करते हैं। ठीक है, तो वो लोग अपने बातों में फंसाते हैं, तो आतंकवादी जो है वो कुछ ना कुछ ऐसी बात करेगा जिससे वो समझ जाएंगे कि नहीं वो क्रिमिनल है। ठीक है, तो मास्ट सेल जो है वो भी आईबी जो है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो ऐसे तुम्हारी सीक्रेट एजेंसी काम करते हैं, तो उस तरह से जो है इट इज एक्चुअली वर्किंग। डेंड्राइटिक सेल इसका काम और जो है यूसिनोफिल स्लाइटली थोड़ा बहुत तुम सिमिलर कह सकते हो। दे आल्सो कैप्चर, प्रोसेस एंड प्रेजेंट एंटीजन टू द एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो है वो नेक्स्ट इम्यून सिस्टम, आई विल टेल यू मोर। तो डेंड्राइटिक सेल जो है दिस विल प्रेजेंट एंटीजन टू द एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। मान लो फॉर एग्जांपल पुलिस से काम नहीं हुआ, तो पुलिस में जो है इन्होंने इनको पकड़ के जो है उनके हायर जो अथॉरिटी है लाइक NSG CBI इनको ट्रांसफर कर दिया, तो तुम इसके साथ कोरिलेट कर सकते हो। एंड लास्टली नेचुरल किलर सेल, destroy compromised host cell such as tumor cell or virus infected cell। देखो destroy compromised host cell माने हमारे बॉडी की सेल, the cells which are present in our body, destroy compromised host cell, the cells which are present in our body which are already like tumor cells। तुम लोगों ने देखे होंगे एक मूवी, अक्षय कुमार का वो मूवी आया था, मुझे मूवी का नाम अभी या ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो उस मूवी में अक्षय कुमार क्या करता है, जो पुलिस से जो लोग मिले हुए हैं ना, पुलिस में जो हफ्ता लेते हैं, घूस लेते हैं, जो मिले हुए होते हैं, तो अक्षय कुमार जो है उनको चुन चुन के मार देते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी की जो सेल है होस्ट सेल, हमारी बॉडी की जो सेल्स है, दो सेल्स आर होस्ट सेल एंड दोस आर एक्चुअली दैट इज क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम लाइक ट्यूमर सेल्स तो हमारे बॉडी से ही है। सो इफ यू किल देम दिस विल बी कॉल्ड एज द दैट इज नेचुरल किलर सेल। ठीक है, आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। लेट मी जस्ट समराइज, बिकॉज देखो अगर तुम नॉर्मली रट्टा मार के तुम पढ़ोगे बहुत टाइम लगेगा। मैं जब स्टूडेंट था मुझे बहुत डिफिकल्ट हुआ, तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो है बाकी लोग इसको कर नहीं पाए, बट द गुड थिंग वाज आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, मैं आईएएस के लिए तैयारी कर रहा था, तो मैं उसके साथ इसको कोरिलेट करके पढ़ रहा था, तो आसान हो गया मेरे लिए। और आज मैं वही सिस्टम तुम लोगों से जो शेयर कर रहा हूँ। आई होप तुम लोगों के लिए भी काफ़ी आसान हो जाएगा, है ना। न्यूट्रोफिल तुम इसको कोरिलेट करो फायर ब्रिगेड के साथ, बिकॉज फायर ब्रिगेड जैसे जो है फायर को दैट इज द वे फायर ब्रिगेड इज एक्चुअली दैट इज अ go to reduce the fire. Similarly, neutrophils are also helping in wound healing. Basophils, it is releasing histamine, it is really informing. Okay, eosinophil, it secretes toxin you can correlate with the ATS or anti-terrorism squad in police. Macrophage, they can phagocyte like arrest, the way police actually arresting the criminal. Mast cell, they can recognize the harmful antigen। ठीक है, जो पुलिस चौकी होते हैं ना, जहाँ पे पुलिस जो है चौकी में बैठे रहते हैं, या फिर जो है पुलिस के जो सीक्रेट लोग होते हैं, दोज आर एक्चुअली टॉक विद द टेररिस्ट, और उनकी बातों से समझ जाते हैं कि हाँ वो क्रिमिनल है। सिमिलरली मास्ट सेल्स आर एक्चुअली रिकॉग्नाइज द हार्मफुल एंटीजेंस बाइंडिंग टू द पैथोजन डायरेक्टली। डेंड्राइटिक सेल्स,
they actually capture, process and present the antigen to the adaptive immune system. And natural killer cell destroy the compromised cell such as tumor cells or other things. The way that is Akshay Kumar was killing the police, जो है ना, those are actually from police, but they are taking the hafta or other things from the criminals. तो उनको जो है पुलिस को ही जो है चुन चुन के मारना, मीन हमारे सेल्स को जो है किल कर देना. ठीक है, इसे क्लियर टू स्टूडेंट्स? समझ में आया तुम लोगों को या फिर मैं और समझाऊं, या तुम लोगों को काफी अच्छा लगा? बताओ. Okay, what about others? Pradeep, Topesh, Preeti, Rajat, Renu, Vikas. Sorry, Viksit. बाकी लोगों को समझ में आ गया? हाँ, सर क्लियर है. Okay, great. चलो. So now let me tell you more. Yeah. So this is a very highly effective defense layer that is largely preoccupied with the trying to kill infectious agents from the moment they enter into the body. Okay, we already have seen how they are actually working. So from the moment when they enter into their body, it will start working. So recruiting immune cells to the site of the infection through the production of the chemical factor, including the specialized chemical mediator called cytokine. It is also helpful for the recruitment of the cytokine. And activation of the complement cascade to identify bacteria, activate cells, and promote clearance of the antibody complexes and dead cells. You can see there are huge number of activity of these cells. And identification and removal of the foreign substances present in the organ, tissue, blood, and lymph by specialized white blood cells. And the action of the innate immune systems are also responsible for alerting the cells that operate the third level defense, like adaptive immunity or acquired immunity, what we're going to learn in next. So अगर मान लो इनसे नहीं हुआ तो क्या करेंगे ये लोग जो है इनसे भी जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो ह्यूमन सेल्स है उनको बताएंगे. जैसे मुंबई में हमने देखा जब 26/11 का हमला हो गया था तो मुंबई पुलिस में हमने देखा बहुत सारे पुलिस शहीद हो गए थे. फिर उन्होंने क्या किया, दे हैव एक्चुअली कॉल्ड टू NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, कि आप आइए और हमें बचाइए. In this case also, if these defense systems may get failed, then they are not able to counter to the that means bacteria, virus. They will be calling to the next level defense systems, the third level defense systems called adaptive immunity. In adaptive immunity, we have two things. One is the T cells, and another is the B cells. There are various types. Let me tell you in detail. Let me tell you first some basic things about the adaptive immune system. So adaptive immune system is actually composed of specially the systematic cells and processes that eliminate pathogen or prevent their growth. And they are highly specific to each pathogen the body has encountered. They are highly specified. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड. तुम लोगों ने देखे मुंबई में जब 26/11 का हमला हुआ तब जो है पुलिस जो है ये जो आजमल अली कसाब ये जो आए थे ना, इनको जो है पुलिस जो है मारने में कामयाब नहीं रहे थे. इन दैट केस NSG को इसलिए बनाया गया था, NSG कैन वर्क एनीवेयर. NSG कैन वर्क एनीवेयर एंड देयर वर्किंग स्टाइल will be much more advanced, dangerous and lethal in our country. NSG, ठीक है. इन US देयर आर लॉट्स ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन, ब्लैक सील कमांडो है ना, वो सारा उस नाम से जो है अवेलेबल है दूसरे कंट्रीज में. बट वी आर इंडियन, हमारे देश की फौज में जो है बहुत गर्व है. वी शुड टॉक मोर अबाउट आवर इंडियन सोल्जर्स. So in this case also, in our immunity also, we have this thing called adaptive immunity. So this adaptive immunity creates the immunological memory also after an initial response to a specific pathogen and leads to an enhanced poison to feature encounter with the pathogen. See, memory. Follow this word, memory. तुम लोगों ने देखे होंगे दिल्ली मेट्रो में बहुत टाइम जो है, दिल्ली मेट्रो या फिर स्पेशली जो लोग दिल्ली से, तुम लोग पता होगा दिल्ली में बहुत सारी जो है रेलवे स्टेशन या फिर मेट्रो, स्पेशली कीर्तिनगर मेट्रो में तुम लोग देखे होंगे जो है इनाम, इस आतंकवादी की जो है जो भी इस आतंकवादी के बारे में बताएगा उसको दिया जाएगा 10 लाख की इनाम, है ना. तुम लोगों ने ऐसे पोस्टर देखे होंगे कि किसी का एक पिक्चर लगा के उसमें जो है इनाम जो है बताए जाते हैं. सो इफ एनी microorganism may enter in our body, so your adaptive immune system will be take the knowledge of that particular that is a organism and it will create some memory. कुछ जो है मेमोरी बना के रखेगा. अजमल अली कसाब वो कैसे आया था,
जो आतंकवादी था हमारे देश में एंटर कर गया, वो कैसे आया था, हाउ इट केम एंड हु वाज हिज हैंडलर, हु वाज हिज बॉसेस, लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, ये जो आतंकवादी है उनका पूरा इन्फॉर्मेशन जो है, एक मेमोरी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे पुलिस एजेंसीज के पास जो मौजूद है। लादेन, उसका पूरा पिक्चर्स, बायोडाटा, डीएनए सब कुछ है। सिमिलरली हमारी बॉडी में अगर कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म एंटर करते हैं इन आवर बॉडी, वी शैल आल्सो मेक सम मेमोरी, ठीक है, सो दैट वही माइक्रोऑर्गेनिज्म दोबारा अगर एंटर करता है सो वेरी इजीली जो है वी कैन किल इट। आज के ज़माने में दोबारा जो है लश्कर ए तोयबा या फिर जैश ए मोहम्मद, दोज आर द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दे विल नेवर टेक ए चांस टू डू ए टेररिस्ट अटैक इन इंडिया लाइक 26/11। व्हाई? बिकॉज आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैविंग द मेमोरी, पूरा इन्फॉर्मेशन जो है उन्होंने सेव करके रखे हुए। सिमिलरली तुम्हें एक बार मान लो चिकन जो है पॉक्स, बसंत होता है ना पॉक्स, चिकन पॉक्स तुम्हें एक बार हो गया, दोबारा तुम्हें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो इम्यून सिस्टम है इसने सारा इन्फॉर्मेशन को जो है सेव करके रखा हुआ इन योर मेमोरी सेल्स। आई विल टेल यू मोर, डोंट वरी, इट हैज एक्चुअली सेव्ड, दैट्स व्हाई you will be never able to get the same disease again. So antibodies are actually very much critical part of these kinds of adaptive immune systems. ठीक है, antibody जो है it's a very big part of our this adaptive immune systems. So they can provide a long lasting protection, sometimes also for the entire life. जैसे मैं अभी बता रहा था ना चिकन पॉक्स के बारे में बता रहा था, पॉक्स अगर एक बार हो गया दोबारा नहीं होगा। मुझे लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में कोरोना हो गया था, फिर जो है दोबारा मुझे कोरोना नहीं हुआ, बिकॉज एंटीबॉडी। सो एंटीबॉडी जो है ये एंटीबॉडी एक्चुअली एसोसिएटेड विद दिस एडाप्टिव इम्यून सिस्टम। ओके, नाउ आई थिंक यू आर एक्चुअली एबल टू कोरिलेटिंग हाउ द थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग। अभी तुम लोगों को धीरे धीरे पूरा मामला जो है वो समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमारी बॉडी काम करता है और कैसे हमारे देश की जो डिफेंस सिस्टम है वो काम करते हैं। हाउ बोथ द थिंग्स आर हाईली कोरिलेटेड एंड दे आर वर्किंग वेरी प्रोफेशनली, वेरी प्रोफेशनली। सो मोर, लेट मी टेल यू मोर. In your adaptive immune systems, you have two kinds of cell, B cell and T cell. These are actually lymphocytes. याद है? In white blood cell, you have studied the various types of cells, various types of white blood cells. One of the type was the lymphocyte. Lymphocyte में भी दो तरह के types है, like B cells and T cells. B cells और T cells में भी काफी सारे types है. I will tell you more, but I am just trying to make the lecture so much interesting so that you may understand layer by layer. तुम जो step by step सारा चीज को सीखो. So the cells that carry out the adaptive immune systems, they are white blood cells known as the lymphocytes. Okay, let me tell you more, B cells and T cells. So first let me tell you the T cells. These are actually generated from the bone marrow, and yes, this is also generated from the bone marrow, but its maturation is actually happening in the thymus. So T, दिख रहे हो T, this T, इसी T से आया T cell. And it is actually B cells actually getting from your bone marrow, bursa in bird, from bird also bursa, and our human also got bone marrow. That's why it is called B. यहाँ से जो है B शब्द आया, B cell and T cells. Let me tell you something more interesting thing. T cells are actually long lived, बहुत लंबे टाइम जो है ये रहेंगे. These are actually short lived, but कुछ केसेस में जो है लॉन्ग लिव भी हो सकते हैं. These are highly mobile. These are actually fairly mobile. These are not that is a complement receptor. These are actually complement receptor. I will tell you how it is actually working as a complement receptor. Then there is no surface Ig immunoglobulin. You have surface immunoglobulin here in B cells. Okay, and no antibody that synthesis happening. Here you can see the antibody synthesis will be happening for B cells. And it is actually T cells are providing the cellular and humoral responses. It is only providing the humoral responses. Okay, let me tell you more about the T cells and B cells. T cells you can categorize into various ways. Here are some list of the T cells like virgin or helper T cells. ठीक है, all they are actually helper T cells, virgin helper T cells, helper T cells, memory helper T cells, memory helper T stem cells. ठीक है, these are various types. So if you want to if you are highly interested, you can learn how the various T cells are actually working. For example, virgin T cell, their standby mode activate the other cells. Helper T cells communicate, kill, activate other cells. Memory cells actually communicate, remember enemies, activate the other cells. See memory माने information जो है कहीं पे save करके रखा हुआ है, memory. Memory helper T cells actually communicate and remember enemies. Killer cell. This is the most interesting thing. Killer cells actually kill the infected cells. You can see these are actually helping
these are memorizing and these are actually killing machines. ठीक है, kill the infected cell. Virgin T cells are actually standby mode and kill the infected cells. Memory cells are also remember and it is also killing the infected cells. And memory killer T stem cells will also remember the enemy and kill the infected cells. ठीक है, so you might be listening a lots of new words on today, so you might be thinking sir इतना कुछ याद कैसे रखेंगे. Don't worry, बहुत सिंपल है. तुम सिर्फ याद रखो हेल्पर, ठीक है, हेल्पर टी सेल्स इस नाम को याद रखो. You may remember the memory, you may remember this killer. इन तीन शब्द को याद रखो और इन तीन शब्द ही तीन वर्ड से जो है सारा चीज बना हुआ है. हेल्पर माने इट विल हेल्प, इट विल, यू कैन सी these are the standby mode communicating with other. Memory, it is saving some memory, it is having some information of the pathogen. Okay, it is having some information of the pathogen. And killer, it will kill the infected cell. Okay, or standby or kill the infected cell and other cell it will be doing. Now let me tell you the B cell. B cells are actually slightly different. They are produce antibodies and activate other cells. There are something called memory B cells. They remember the enemy and produce antibody. SARS-CoV-2 के लिए तुम लोगों ने जो है क्या लिए हो, वैक्सीन लिए हो. क्यों लिए हो वैक्सीन? So that your body may produce some antibodies. है ना, यही तो फंडा है पूरा. Your body may prepare some antibodies. So antibody कैसे बन रहे? How and where? Answer is here. Answer is here. So your B cells are actually one kinds of that is cells which actually remember enemy, for example SARS-CoV-2, SARS-CoV-2, and it will produce the antibody for that virus. And memory stem cells also. So remember the enemy and produce this for stem cell. Stem cell, I think all of you are aware of what is stem cell. So it will keep the memory for long period of time. ठीक है, इज इट क्लियर टू यू स्टूडेंट? समझ में आया यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, बताओ मुझे. आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग्स अगेन एंड अगेन. मजा आ रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. ओके, ग्रेट. बाकी लोग व्हाई यू आर साइलेंट? पूजा, पूर्णेश, रजत, तपेश, प्रदीप, रेनू एंड विकसित. तुम लोग जस्ट स्पीक, बिकॉज देखो तुम लोग जब बताओगे ना तब मुझको जो है आई फील हैप्पी कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली लिसनिंग दिस लेक्चर राइट नाउ? प्लीज राइज योर हैंड्स सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड. एक बार अपना हाथ उठाओ, जस्ट राइज योर हैंड्स दोज आर एक्चुअली लिसनिंग दिस लेक्चर. तपेश, विकसित, प्रेरणा, ऋषभ, प्रीति, रेनू, व्हाट अबाउट पूजा, पूर्णेश, प्रदीप, रजत. Okay, Rajat also raise his hands. Okay, you may try to interact. Anna. Okay, thank you for raising your hands. Please down your hands. Okay, so it is very much clear to you all how our T cells and B cells are actually associated in our this thing called adaptive immune system. Let me tell you more about these T cells and B cells, because these things are actually coming to play a very big role. So whatever I was actually trying to tell you, that if you do not able to recall or remember all the various kinds of T cells and B cells, जितने भी types है, अगर तुम्हें याद ना हो, तो you can also remember in this way. Helper T cells, they have two different kinds of work. One is the antigen recognition and effector function. SARS-CoV-2, कोरोना वायरस, SARS-CoV-2, इसको recognize करना होगा ना. SARS-CoV-2 should be recognized first, then it should be killed. तो helper T cells will do this kind of activity. Cytotoxic T cells will do these things, and regulatory also do these things. And B cells, you can see these are the slightly different kinds of work. They actually neutralize the pathogen, phagocytosis and other things it will do, but it will be working based on the antibodies. It will be working based on the antibodies, your B cells. Let me tell you more. You should always remember T cells will be always generate the cell mediated immunity. There is something called MHC, major histocompatibility complex. I will tell you more what is MHC. So T cells are actually associated with the MHC, major histocompatibility complex. I will tell you tomorrow, because I think itna time hai mere paas. Okay, and B cells are actually associated with the humoral immunity, and they are working based on the immunoglobulin and antibodies. B cell, ठीक है, B cell के कारण ही जो है हमारी बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन और एंटीबॉडी जो है सारे बनते हैं. So I have mentioned here in detail what is cell mediated immunity. So all of you already are clear that cell mediated immunity are actually associated with the T cells.
Okay, I mentioned whatever I have told you, same thing I mentioned here, what are the various components of T cells and how it is working. And humoral immunity are actually working based on the B cells. Okay, and it is working because of the immunoglobulin and antibodies. There are some similarity between immunoglobulins and antibodies, but there are some slightly differences are also. In many of the books, you'll be observing they are saying immunoglobulin and antibodies are same thing, but in some books you'll be getting they are slightly different. I will tell you more into detail, don't worry. So let me discuss the same thing in a different in a chart. So cell mediated immunity, in definition, an adaptive immunity that mediates the cytotoxic lymphocytes or TH without involvement of the antibodies, मतलब T cells. T cells को use करके अगर हम कोई that is adaptive immunity we gain, we shall call it as a cell mediated immunity. Humoral immunity, all of you are aware, B cells will become here, B lymphocytes will come here. So an adaptive immunity that mediates the antibodies by producing B lymphocytes. Mode of action, how they are working, direct cell to cell contact by or secrete the cytokine. Here antibody will be travel through blood circulation. Okay, here cytokines actually come into the picture and direct cell to cell contact, and here it is actually working by the antibodies. Now antibody detection done by the receptor located on the cell surface, here done by antibodies directly. Okay, in this case antibody is also playing a big role, but it is done by receptor located on the cell surfaces, and it is directly doing its work. Then mechanism, how they are actually working. So cell mediated immunity, I have already mentioned, that is from that cell the immunity will be induced, and in that case antibody will induce the immunity. Okay, and antibody production, here no antibody production is happening because it is T cell, and here antibody is actually producing because it is B cell. हमेशा याद रखना B के साथ जो है एंटीबॉडी जुड़ा हुआ है. ठीक है, बहुत टाइम डिफिकल्टी होगा तुम लोगों का कि जो है सारे नाम याद नहीं रहेंगे, कन्फ्यूजन होगा. सो बी के साथ जुड़ा हुआ है एंटीबॉडी, क्योंकि ए बी सी डी पढ़ते हो, बी ए बी सी डी है ना. ए बी सी डी के क्रम में क्या आते हैं, ए के बाद बी आते हैं, फिर आते हैं सी. तो यू शुड रिमेंबर इन दिस मैनर दैट बी सेल्स के साथ जो है our antibody is actually associated. Purpose, why we are doing the cell mediated immunity, primary defense against the intercellular pathogen, and it is actually working primary defense against the extracellular pathogen. Extracellular means out of our cell and which actually coming out from our body. Then immunological services, it is providing, but it is not providing any kind of surveillance. Surveillance माने क्या है, जैसे रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है ना. तुम लोगों ने रॉ के ऊपर बहुत सारी मूवीज भी देखे हो. अभी शायद अमेजोन में कुछ आया भी था, मैंने तो उसका मीम देखा, बट आई हैव नॉट सीन द मूवी. कौन था वो एक्टर, मनोज बाजपेयी आई थिंक. अगर तुम लोग देखते हो, आई डोंट नो हाउ मेनी यू आर एक्चुअली वाचिंग. अच्छा, तुम भी देखो, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड. मुझे लगता है कि मैं ही जो है आई एम ओनली वन हु जस्ट सी ऑल द मीम्स. Good, all of you are young people and you are our youngsters and you are updated with all the things are happening around the world. Very good, but you should correlate that thing with our studies so that तुम अपनी स्टडीज में जो है और ज़्यादा that is advancement ला पाओ. So raw research and analysis wing, it will do surveillance. Surveillance पता है तुम लोगों को क्या है, माने निगरानी करना, नजरदारी करना है ना. तो बहुत जो है this thing T cells will be actually doing surveillance. Then immunity against cancer, developed immunity against cancer, but in this case since it is not eliminate tumor cells, cannot develop immunity against cancer, but these things can develop. This T cells mediated or cell mediated immunity can develop against cancer. So whatever I was telling you at the beginning of my lecture, now if you read these things, many of the things will be very much clear to you all. Macrophage, you have seen, it will be engulf all the things है ना. Macrophage क्या बताया था, arrest करने का काम है. Neutrophil, it will activate to the other cells है ना. Natural killer cell, it will kill. You have seen where it is coming. Complement, I have not mentioned, that is forget these things. Mast cell, you also have studied about mast cell, they are actually communicating. Monocytes are also standby mode. Okay, then you have forget this,
Memory helper T cell, you have seen these things. Basophil also you have seen. Eosinophil also you have seen. Virgin helper T cells, I have told you, they are actually helping. Then helper T cells are communicating, that is communicate cells, activate other. Memory, this is also one kind of T cells, T cells. Antibodies you are also aware, it is making by the B, A, B, meaning B for the B cells. Killer T cells are killing. These are also T cells. These are also B cells. Okay, let me remove the ink and let me summarize in a more easiest way. देखो हम लोगों ने टी सेल और बी सेल में बहुत सारे क्लासिफिकेशन देखे. लेट मी जस्ट हाईलाइट फर्स्ट टी सेल्स. दिस इज अ टी सेल, दिस इज अ टी सेल, this is a T cell, another one is a T cell, here is again another T cell, here is again another T cell, this is also a T cell. Yeah, these are the all T cells. Let me again write or highlight the B cells with a different color जो है, yeah, here you can see this is the B cell, this is a B cell, this is a B cell, this is also okay, now this is the T cell. Okay, now apart from B cells and T cells, all the remaining things are the some cells are actually coming from our that innate immune systems. याद है second line of defense जो था, macrophage and other things. So now you can able to understand that complex thing is how much easier. देखो तुम अगर अपना टाइम थोड़ा स्पेंड करो तुम बहुत कुछ इसमें से सीख सकते हो. मैक्रोफेज जो है it will inform to neutrophil. Neutrophil will activate other cells. It can make some interaction with this. न्यूट्रोफिल जो है वो दूसरे सेल जो है उसको एक्टिवेट करेगा. देखो जितने भी लाइन से कनेक्टेड है ना, दिस दिस एंड दिस. So neutrophil it will just activate other cells. Natural killer cell, it will also communicate with killer enemies. Okay, see it is coming, it is actually working on the helper T cells. So all these various cells, don't worry, I will not discuss too much. I am just trying to introduce that how the things are actually associated. ठीक है, जैसे you have seen that police, army, all are actually in touch. They are communicating with each other, but in a very sophisticated form. Here also you can see all the various adaptive immune systems, that is innate immune system cells, like your these things, macrophage and other these things are also actually coordinating or discussing with your other cells, other adaptive immunity cells, and through that final function is actually coming and it is actually killing the virus and bacteria and other things, है ना. सो देखा कितना इंटरेस्टिंग है पूरा जो हमारा जर्नी. सो लेट मी टेल यू सम डिफरेंसेस बिटवीन द इनेट एंड एडेप्टिव. इनेट इम्यूनिटी सिस्टम, दिस इज वेरी फास्ट, दिस इज वेरी फास्ट. फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेशन हो जाना, बहुत टाइम हो जाता है ना, कहीं पे इन्फ्लेमेशन हो जाते, दिस इज वेरी फास्ट and it will be work within 12 hours. But for adaptive immunity it will take long time. इसलिए you have seen for कोरोना वायरस जो लोग वैक्सीन लेते हैं कहते हैं ना कि after some time antibodies will generated, after some time antibody will form, because it will take some much more time for generating of the various B cells and those B cells will generate your antibody. Okay, so innate immunity, immediate response will get, but here it will take much more time. Let me tell you some other examples in other that is parameter. So in innate immunity, so physical barrier also are actually coming in some of the books ना, जो मैंने first line defense बताया था, first line defense, in some of the books they have mentioned the first line defense are also coming under innate immunity. Anyway, this is up to you how you will learn. Both the things are correct. If the teacher may see, if you just write that skin barrier is coming under innate immunity, it will also correct. If you tell the skin barrier is the first line immunity, it will also correct. So physical barrier and your non-specific or cellular response like macrophage, granulocyte, natural killer cell, dendritic cells and leukocytes, these things are actually coming under the natural specific cell responses. In adaptive, you have very nicely seen that B cells and T cells or B lymphocytes or T lymphocytes actually coming under the that is adaptive immunity. You have the humoral response and you have the specific cellular response. Only T cells will be generating the cellular response. Some of the T cells can also generate the humoral response, but mostly it is working based on the B cells and macrophage. Okay, so that's it from my side on today.
tomorrow I wish that तुम लोग देखो मैं already 5 मिनट ज़्यादा ले लिया तुम लोगों से, extremely sorry. I was actually interested to teach you these things in a very crystal clear way, ताकि तुम लोगों को पूरा लाइफ में जो है कभी भी इस टॉपिक को लेकर कोई दिक्कत ना हो. I know a lots of people, those are very senior and but still the date the immunity is not clear to them. Okay, so let me just recap whatever the things we have seen. We have seen these things. What is immunity? How we have 3 levels of the immune defense system. I have first discussed the first level of the our immune system. Then I have told you that how skin and other things are actually helping to our body. Then I have discussed the second line, that is innate immunity. I have told you how innate immunity is actually working and what are the various cells and their function. They are also working similarly the way police is actually working. Then I have mentioned what are their functions, and then I have focused on the adaptive immunity, which is the ultimate and last level immunity in our body, like NSG and your ED and your CBI are actually working. So these are the most advanced. These are mostly associated with the B cells and T cells. So I told you what are the differences between B cells and T cells, from where B cells and T cells are actually generated. T cells are actually generated from the maturation is happening in the thymus. That's why the T name is actually coming. B cells are actually coming from the bone marrow. From that word it is coming the B cells. T cells are very highly mobile, but it is a very it is also a very long-lived. Okay, and B cells actually not so much long-lived, short-lived. That's why बहुत टाइम कहते हैं ना कि कोरोना वायरस में जो एंटीबॉडी बने हैं वो short-lived है. That's why you have to take 2 different doses. You have to take 2 different doses because antibody is actually associated with the B cells. Then I have told you various types of the T cells and B cells and their functions. Then I have told you that T cells are actually associated with the cell-mediated immunity, and MHC is actually coming to the picture, and B cells are actually associated with the humoral immunity, and immunoglobulin or antibodies also taking to the picture. I have mentioned how they are different, that cell-mediated immunity and humoral immunity. Cell-mediated immunity is actually associated with the T lymphocytes, and humoral immunity is associated with the B lymphocytes. How they are working, and their antibody detection, everything I have mentioned. I also have told that this here no any antibody will be generated, but yes, here antibody will be generated. So, and after that I have told you that the entire network, how they are interconnected, the various our immune cells.